अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। सरफेस इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जी दैट सेटिस्फाइज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जी equal to 0. For example, x squared plus y squared over 4 plus z squared over 9 equal to 1 is a type of surface. This type of surface is named as ellipsoid and whose shape is this. Another example of surface is x plus 2y plus 3z equal to 6, and this type of surface is named as plane and its shape is like this. There can also be other types of surfaces and we will discuss about these later on. Now we'll discuss about quadratic surfaces. A quadratic surface is defined as the set of all points which satisfies second degree equation ax squared plus by squared plus dxy plus eyz plus fxz plus gx plus hy plus iz plus j equal to 0, और इस पे कंडीशन ये है कि a b c d e and f are not all 0. Sum of a b c d e and f may be 0 but all will not be equal to 0. An example of quadratic surface is a sphere x square plus y square plus z square equal to 9 and its shape is this. And another example of quadratic surface is cylinder, and a type of cylinder is x squared equal to 4y. Its shape is this. There can also be other types of quadratic surfaces, for example sphere, ellipsoid, paraboloid, hyperboloid, and we will discuss about these shapes later on. Thank you very much. Dear students, अब हम properties of surfaces के बारे में पढ़ते हैं। एक बड़ी important property symmetry है। Symmetry हम कहते हैं कि अगर कोई shape उसको हम flip करें या उसको हम slide करें या उसको हम move करें तो वो exactly same होते। For example, ये हमारे पास एक shape है, इसको अगर हम इस line के round flip करें तो ये same shape बन जाती। इसी तरह इसको हम इस लाइन के राउंड भी फ्लिप करें तो सेम शेप बन जाती। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल है अबाउट दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन और दिस लाइन। इसी तरह ये हमारे पास एक फिगर है, अगर इसको हम इस लाइन के राउंड फ्लिप करें तो सेम शेप बन जाएगी। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट दिस लाइन। और हमारे पास यहाँ पे कोई और लाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लाइन लें तो इसके अराउंड ये सिमेट्रिकल नहीं है, अगर हम इसको फ्लिप करें तो ये सेम शेप नहीं बनेगी। इस तरह हमारे पास ये एक शेप है, इसको इस लाइन के राउंड फ्लिप करें या इस लाइन के राउंड फ्लिप करें तो सेम शेप बन जाएगी। यानी कि ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल है अबाउट दिस लाइन और दिस लाइन। इसी तरह ये हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जिसके राउंड इसको हम फ्लिप करें तो सेम शेप बन जाए। इसी तरह क्वाड्रेटिक सर्फेसिस भी सिमेट्रिकल होती हैं। क्वाड्रेटिक सर्फेसिस की सिमेट्री के लिए रूल ये है कि इफ f of x, y, z equal to 0 implies f of x, y minus z equal to 0 means surface is symmetrical about x, y plane. For example, x plus y plus z squared equal to 3 ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में z की जगह माइनस z पुट कर दें, जैसा कि x प्लस वाई प्लस माइनस z होल स्क्वायर इक्वल टू 3, इट बिकम्स x प्लस वाई प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 3, जो कि सेम इक्वेशन है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो सरफेस है, ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली इफ f of x, y, z equal to 0 implies f of minus x, y, z equal to 0, हम कह सकते हैं कि सरफेस सिमेट्रिकल है अबाउट y, z plane. Similarly,
if f of x, y, z equal to 0 implies f of x minus y, z equal to 0, it implies that the shape or surface is symmetrical about xz plane. Similarly, we can check the symmetry of the surface with respect to one of the axes by the following method, that is, if x, y, z equal to 0 implies f of x minus y minus z equal to 0, that means surface is symmetric with respect to x-axis. Similarly, if f of x, y, z equal to 0 implies f of minus x, y minus z equal to 0 implies the surface is symmetrical about y-axis. And if f of x, y, z equal to 0 implies f of minus x minus y, z equal to 0 implies surface is symmetrical about z axis. And the last but not the least criteria for this surface to be symmetric about origin, that is, if f of x, y, z equal to 0 implies f of minus x minus y minus z equal to 0, it implies that surface is symmetric about origin. थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह 2 डायमेंशन में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होते हैं, इसी तरह 3 डायमेंशन में एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट एंड जी इंटरसेप्ट होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड द सरफेस। And similarly, z-intercept is the z-coordinate of point of intersection of surface and z-axis। और इनको solve कैसे करते हैं, इनको find कैसे करते हैं। For example, हमारे पास एक plane है 2x plus 3y plus 4z equal to 12 और हमने x intercept find out करना है। To find x intercept हमें y equal to 0, z equal to 0 substitute करना पड़ेगा in the equation of plane। तो हम इसको substitute करते हैं। 2x plus 3 into 0 plus 4 into 0 equal to 12 और इसको हमने solve किया तो 2x equal to 12, that is x equal to 6, means x intercept of this plane and the x-axis, that is x intercept हमारे पास 6 आ गया जो कि इस प्लेन का और x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 6 है यहाँ। सिमिलरली y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, that is 3y equal to 12, that is y equal to 4, that is y equal to 4, that is y इंटरसेप्ट हमारे पास 4 आया जो कि इस प्लेन का और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम लें तो उसका y कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4z इक्वल टू 12 और इसको हम सॉल्व करें तो z इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू 4 z इंटरसेप्ट आ जाएगा इस प्लेन का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। अ ट्रेस इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस एंड अ प्लेन। दिस प्लेन कैन बी एनी कोऑर्डिनेट प्लेन और पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। दिस प्लेन कैन बी xy plane, yz plane or xz plane or parallel to these plane. For example, if we have a sphere x square plus y square plus z square equal to 25 and we want to have a trace at z equal to
3, then x squared plus y squared plus 3 squared equal to 25, that is x squared plus y squared plus 9 equal to 25. इसको further solve करते हैं. x squared plus y squared equal to 25 minus 9, that is x squared plus y squared equal to 16, which is an equation of circle. That means कि x square plus y square plus z square equal to 25 जो कि एक स्फीयर था, उसका हमने इंटरसेक्शन एक प्लेन के साथ लिया z इक्वल टू 3 जो कि xy प्लेन है, उसके साथ हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई x square plus y square इक्वल टू 16, दैट इज x square plus y square इक्वल टू 16 जो सर्कल है ये एक ट्रेस है x square plus y square plus z square equal to 25 का at z equal to 3. Dear students, अब हम sections को discuss करते हैं. Sections are the curves of intersection of surface and a general plane. This general plane can be any coordinate plane, that is xy plane, yz plane or xz plane, or parallel to these planes. To find the equation of this section, we have to solve the equation of surface and the equation of plane. Next we discuss about boundedness, whether a surface is bounded or not. If a surface is having a finite size, then we say that this surface is bounded. That means if a surface is having a finite size, that means it is bounded. And similarly, if the size is infinite, then we say that the surface is unbounded. For example, in the following figures, in the figure 2, we see that the surface is having a finite size, so we say that this surface is bounded. And in figure 3, again surface is having a finite size, and we say that this surface is bounded as well. In figure 4, we see that surface is having infinite size, and so we say that this surface is unbounded. And similarly, in figure 5, again the surface is having infinite size, so we say that this surface is unbounded as well. Thank you very much.